Please give me around 2 to 3 minutes more, like I'm trying if more participants are joining or not.
Good afternoon, all. Actually, today it seems like participation is a bit less, but okay, I'll be continuing with my presentation from now. So like a disclaimer which I would like to give in the start of this presentation is this presentation is general in nature and is meant for educational purposes only. Like if anyone have questions concerning the meaning or application of a particular act, rule or regulations or anything, like you may seek professional advice. So like flow of the presentation would be like I would be covering like first importance of commodity derivatives market, then what are the major commodity markets in India and world, and then main agri commodity exchange and commodities traded, along with like some definitions and terminology, and like what are the factors which affect our commodities trade, and what are the do's and don'ts of while you are trading. So like going about the importance of commodities derivative markets, like the importance for commodity derivative market in agriculture here is to develop a competitive agri markets, which helps in better price discovery and all, and which gives a better bargaining power for all, for better bargaining power for all the market participants present. Then one more thing, like physical markets generally are very means like are very distorted, and there is no proper organized thing. So having an exchange platform helps us in standardizing, like for a commodity it helps in standardizing the prices, and uh, it also, our commodity derivative market also provide an opportunity to safeguard against price volatility, like based upon the trading strategies you can follow, which I'll be covering in the coming slides. And uh, uh, and it can be also used to further strengthen future markets, so that the real benefits of the technological innovation in the form of electronic markets can help in help to the farmers and all for getting their prices. So, talking about the commodity derivative markets, any commodity derivative market or contract, it derives its values from underlying goods, and goods would include like any, it should be any tangible goods. Like it means that anything which is trading in physical, what are the trends going on in physical market reflects on our derivative exchange, like that would be the same trend on our exchange platform. So like any investors which may can start trading by undertaking the following steps. Like first of all, you need to choose a broker, open your trading account with a SEBI registered broker, and depositing required margin with the broker, and like basic things like opening your bank account and ENWR account. uh, Now like I would be discussing about the evolution of commodity exchanges. Like if we see globally, like first commodity exchange came out to be our Chicago Board of Trade, which was in 1848. Then gradually futures contracts started trading from 1865 globally. Then in 1898 came our Chicago Mercantile Exchanging. And in India, if we talk of first in 1875, for trading purposes, first we had Bombay Cotton Trade Association Limited.
Then in 1930 came Hapur Chamber of Commerce for wheat, and then for jute, one exchange came in Calcutta Hessian Exchange for jute in 1919, and then we had futures trading for bullion started in Mumbai in 1920. So in 1952 we had our Forward Contracts Regulation Act enacted, and uh, uh, like Forward Market Commission was set up in 1953, but because of, again, due to some reasons, futures trading got banned in 1960. Then again in 1980 it was suggested to like Khusro committee recommended reintroduction of futures trading. uh, just give me a second, I need to mute. Yeah. When we talk of electronic trading globally, it started in the 90s, 80s and 90s. Electronic trading started, and in 2003, government permitted futures trading in commodities in India. And from 2015, SEBI becomes our regulator of commodities exchanges in India. So this was a brief evolution of how commodity exchanges happened both globally and in India. If we talk of like major global commodity exchanges apart from India, it is like in USA, it would be Chicago Mercantile Exchange, then Kansas City Board of Trade, and then we have New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange. In UK, we have London Metal Exchange, and in China, it is Dalian Commodity Exchange. So these were the few examples. Like if you go and browse, like there are other countries also, like you can see the major exchanges. In India, the exchanges which offer commodity trading in India, apart from the other than stock exchanges, are NCDX, National Commodity and Derivatives Exchange Limited, and MCX, Multi Commodity Exchange Limited, and ICEX, which is Indian Commodity Exchange. Uh, and these are the stock exchanges which are offering even BSE and NSE also offers commodity derivative trading in India. So like it is overall like these are the commodities being traded on stock exchanges in India. If we talk of agri commodity, like apart from NCDX, also these commodities have been included, like grains are there, which would have barley, bajra, maize, wheat, and pulses. It's chana, moong, and then in spices we would have coriander, turmeric, etc. So these are like the, and in oil seeds we can have RM seed oil, and we have soybean oil, and soybean seed we are having, which is getting traded. So these are the major commodities which are being traded on stock exchanges in India. So like it's just a question for all, like who regulates the commodity derivatives market in India. So like you can place your answer in the chat box. Yes, we have received one answer. SEBI, yeah, SEBI is the right answer. So like I would be moving to the next slide. SEBI was the correct answer here. So like if we talk of the major participants on the exchange platform, there are major three participants are there on our exchange platform. That is arbitrators, speculators, and hedgers. Arbitrators are those market participants which utilize the difference between the prices of one market compared to the other market. Like for example, if I have to say that uh, I take an example of chana, for example, like Jaipur chana, for example, it's 5,000 rupees per quintal. And if we talk of Delhi is a major consumption center. So if chana moving from Jaipur to Delhi, if we talk of the freight, it should be, it's around 50 rupees per quintal is the freight assumed from Jaipur to Delhi. So it's 5,000, it should be, the landed price should be
5,050 rupees per quintal. But suppose assuming like Delhi is trading at 5,100 rupees per quintal because of high demand or something like that, some supply demand factors. So what those arbitrageurs, now they get an opportunity here that simply they will purchase the material in Jaipur at 5,000 and they will deposit and they will sell that same chana uh, in Delhi. So 50 rupees, the disparity. So these arbitrators actually utilize the simultaneous price difference and the disparity which is there between the two markets, and that is how they earn money. And speculators, if I have to say, speculators is something like, okay, I have purchased a commodity today at 5,000 rupees per quintal, and at the end of the month, I expect the prices should be moving till 5,200. And suppose my cost of carry for 1 month, for example, those warehousing charges and all other expenses, it's suppose approximately it's 50 rupees per quintal. So it would be just like since I expect 5,200, and in case the prices reach 5,200, I in cash 150 rupees per quintal, I'd be having it in my pocket. So here, but in speculation, what is there? It's fully you are exposed to the risk actually. Like even in case if the prices goes down to 4,800 from 5,000, it's a straight loss of around 150. It's a straight loss of around 200 rupees, where it was a profit of 200 in case the prices rose to 5,200 levels. But in the case of hedgers, what they do is like generally the processors and those exporters, for example, like suppose they have made a position today, but to offset the risk actually they will make an opposite position. Suppose is like in physical markets, I have purchased at 4,800, and futures trading at that time is 5,000 rupees. For example, I am a stockist, and like I want to uh, like at some later point of time I want to sell my commodity and encash the profit based on my hedging strategy. So here the price difference is 200. Like physical market is at 4,800, future market is at 5,000. So 200. So what I do is I purchase in physical at 4,800 and sell the futures at 5,000. Suppose suppose for example in physical markets, the, the demand suddenly rises. Suppose because some festive season comes and all, and the physical market prices reach, for example, at suddenly the spike happens from 4,800 to 5,100. But suppose we get to see that future markets have just reached from 5,000 to 5,200 only. So suppose spot markets moved from 4,800 to 5,100, and future markets rose only by 200 rupees. So that is the 100 rupees gap we get to this is how we are making profit. Like the difference is getting narrowed between spot and futures. Anyways, like it would be getting slightly confusing here, so we actually present on this topic like trading strategies. Presentation is conducted by our this in this our webinar series we conduct especially for trading strategies. In this we illustrate through different examples, so in that you can attend the session and get to learn about in detail and in more with more clarity. So like composition of commodity derivatives is, first of all, the major part in this ecosystem is our stock exchanges. For example, our NCDX, MCX, be it any exchange. Then second is clearing corporation. Like clearing corporation, what it will do is it's just an it would be an organization which is actually associated with an exchange to handle all those confirmation, settlement, delivery of transactions, etc. It is in short just to fulfill the main objective of like ensuring that transactions are made in an efficient manner. And then we have repositories. Repositories are it's just an entity which centrally collects and maintains, like it's maintaining the records of over the counter trades and exchange traded derivatives, whatever just to maintain those records. It's an entity which exists.
Apart from that, additional stakeholders like clearing corporation I've already discussed. Warehouse service providers are there, like different companies which have their warehouses. Like for example, I can say LTC, Star Agri, NCML, for example. Then we have RWDRAs, like warehouse development regulating authority, it's there. Then we have quality assessors and testing labs which ensure that this is the minimum quality, means like whatever the quality, minimum quality specifications we are having, like those quality specs are met or not. So for that, quality assay testing labs are there to give those reports accordingly. Then we have price polling agencies, uh, which actually do this spot polling. Then we have farmer producer organizations also, which actually aggregate those different the commodities of different small farmers, and then come and participate on the exchange as an entity or a company. uh, Now, like, I have to compare, like, suppose what are the major differences between commodity derivative markets, and you would have heard of equity derivatives market as well. So here in commodity derivative markets, the underlying commodity, whatever would be there is, it's standardized as per exchange specification and has an expiry date. While in equity derivatives market, it is perpetual, means it's continuous, like it's nothing like as an expiry date here, it's there in commodity derivatives. So and in this commodity derivatives market, underlying market is bit sort of fragmented. We don't get every time what is the exact price, actual price of the commodity, which actually gets fluctuated based, means it's sort of price opacity is there. But in equity derivative markets, things are organized and prices are better known, and underlying supply, it's like estimated uncertain, means like we don't know the exact, means like it's just based on our survey, we know okay, this much would be the production. But things would vary based on, like, a company would be estimating this is the production, but another company estimate this is the production. So but in equity derivative markets, whatever the supply is there, that is certain, it's available in public domain. Like here in commodity derivatives, participants could be traders, brokers, FPOs. In equity derivatives, it is retail and institutional. Then in commodity derivatives, we handle the goods physically, but in equity derivatives, just it's sort of demat and settlement. Price sensitivity would be high in commodity derivatives, because again, there's the market is fragmented, and also even a certain rumor can impact the prices a lot. And then if we see sophisticated level of participation, it's low in commodity derivative market, but in equity derivative, it is sort of mature. So, like, my second question would be whether SEBI regulates spot market commodity trading also. Like, it's just a simple question based on what we have discussed so far. Like, you can give your answers in the chat box. Anyone, please? Yeah, it's a correct answer. Actually, SEBI regulates just the exchanges and commodity exchanges platform. They will regulate. They don't regulate a spot market. It's spot market are our physical market, so they do that thing. Okay, so I'll move forward. So, like, again, so like, benefits of commodity derivatives, like, already some benefits had been covered while I was discussing the difference between commodity and equity markets. Like, okay, here in commodity derivative markets, the major benefit is it helps in better price discovery. Like, more the number of market participants would be there, and on a standardized exchange, we more better we can discover the prices.
and like through the trading strategies like hedging and all, we can mitigate our price risks, and counterparty credit risk and all also is eliminated. Like we have a certain regulating thing to check whether the default thing and all doesn't happen on the side of payment and all such things. And even it's access to all types of market participants. The products are standardized, means like for every commodity, like in NCDX you can go under the product section, and if you go like any commodity you select, there you will find a contract specifications and a product note where everything is standardized, that uh, this is the minimum specifications and all which we exchange at our platform. Then it's everything is transparent because everything is in front of the screen of all the players. So like when you would be going through the product note, like which I had discussed in my previous slide, for any of the product, like you will find some common terms which would be there irrespective of the commodities. Like one is final settlement price. So final settlement price is generally, what we do is, when the contract generally expired is the 20th of the 20th of any month, and in case 20th is a holiday, so whenever a day before or 2 days before, whenever it's the last working day before the 20th of the month, we that is the our final day, and then based on that is our expiry day actually, which you are seeing as E naught. So just the simple average of the last poll spot prices of the last 3 days expiry day, and 2 days before the expiry, that is our final settlement price. And मार्क टू मार्केट मार्जिन, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन, मतलब जैसे आपने सौदा 1750 में किया किसी भी कमोडिटी का, तो क्लोजिंग मान लीजिए 1800 हो जाती है। मान लीजिए आज मैंने बाइंग कर ली 7050 पे, और 1800 पे फाइनल क्लोजिंग हो जाती है, तो वो एक तरफ से दैट इज माय डिफरेंस बिटवीन दैट 50 रुपीज का जो डिफरेंस है, दैट इज माय मार्क टू मार्केट मार्जिन। एंड ऑफसेट इज जस्ट नथिंग लाइक, जो भी आपकी पोजीशन है उसका आप एंटरिंग इनटू अपोजिट पोजीशन पे जो भी आप जाते हो ऑफ एन आइडियल आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसको ऑफसेटिंग कहते हैं। स्टैगर डिलीवरी क्या है कि जैसे लास्ट 5 वर्किंग डेज जो प्रायर टू एक्सपायरी होते हैं, लाइक ई नॉट, E1, E2, E3, E4 आप कह लीजिए, मतलब जैसे अभी ई नॉट एक्सपायरी डे कहा है, तो इन पीरियड में अपनी स्टैगर डिलीवरी स्टार्ट होती है। स्टैगर डिलीवरी मींस इनमें अगर आपकी ओपन पोजीशन है, इससे पहले आपने ऑफसेट नहीं, मतलब आपने अपनी पोजीशन कैंसिल आउट नहीं करी है, तो आप या तो सेलर हैं या बायर हैं, बेस्ड ऑन दी पोजीशन आपको डिलीवरी मार्क हो जाएगी, एंड यू आर बाउंड टू डिलीवर। और एल्स इफ अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें देर आर मेजर्स टू check that thing. So and commodity index है जैसे an index of prices of constituent commodity futures contract, जैसे अभी recently ग्वार डेक्स लॉन्च हुआ है, उसमें ग्वार गम और ग्वार सीड है, ऐसी सोया डेक्स भी लॉन्च हुआ है। तो इट्स जस्ट एन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक सिमिलर प्रोडक्ट का जो एक बास्केट हो जाता है ऐसे। और डिलीवरी लॉजिक इज जस्ट लाइक, यस एवरीवन शुड बी गिविंग कंपलसरी डिलीवरी। सेलर्स के पास ऑप्शन रहता है, बायर्स इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी, इफ सेलर इज नॉट हैविंग तो वो जो भी उसको मतलब उसमें पेनल्टी है उतना दे के, लाइक इट कैन सेटल आउट थिंग्स। एंड इंटेंशन मैचिंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट वेयर लाइक बायर एंड सेलर का जो प्राइसेस है, व्हेन दैट थिंग इंटेंशन मैचिंग जब हो जाती है, देन these are the major three components of our delivery logic. And price discovery, like how it helps is, it is just not of exchange like anywhere, if it is the price discovery platform अगर एक रहता है तो like you have the access to better price sellers through SMS, through website or anything, then it helps in enhancing your bargaining power as a buyer or a seller. And it also helps to facilitate to reduce the dominance of commission agent और middleman का जो वो रहता है उनका, क्योंकि यहाँ एक exchange platform के आने से वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। It's just an illustration like of a farmer, like okay, the one who has locked his prices, he did not worry like based on even if, suppose like price fall हो जाते हैं जनरली हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो अगर उसने 2-3 महीने पहले ही जाके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपना एक प्राइस फिक्स कर लिया, सो इट नीड नॉट वरी। बट लाइक सपोज
कोई और फार्मर जिसने लॉक नहीं किया थ्रू एफपीओ और समथिंग लाइक दैट, सो सडनली जब अराइवल प्रेशर आता है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइसेस फॉल होते हैं, तो यस लाइक, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इलस्ट्रेशन। Uh, इधर लाइक एक और क्वेश्चन, लाइक विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज, लाइक अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक जस्ट टू मेक इट make the session bit interactive, like I have added, so if anyone who can answer this, anyone please. Yes, it's the correct answer. Like, yes, all these parameters impact the prices of agri commodities, like based on weather condition, favorable weather conditions है तो prices कंट्रोल में रहेंगे, अगर एडवर्स में prices बहुत राइज कर जाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगेन वेदर कंडीशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, एंड इन रिटर्न द प्राइसेस आर आल्सो इम्पैक्टेड, एंड चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज कैन decide your supply and demand of that commodity in the market. So yes, these three factors help in the prices of agri, in deciding the prices of agri commodities. लाइक अब मतलब जैसे हाँ, की फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कोई भी कमोडिटी के हैं तो उसमें मेजर दो उसमें डिवाइडेड रहते हैं, ट्रेड पैरामीटर्स और रिस्क पैरामीटर्स। अब इसमें ट्रेड पैरामीटर्स क्या है, बेसिस सेंटर, बेसिस सेंटर मतलब एक्सचेंज बेस्ड ऑन जहाँ पे भी कोई कमोडिटी सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, या बेस्ड ऑन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कोई भी एक जगह को बेसिस सेंटर डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बार्ले का एग्जांपल लूँ तो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग सेंटर बार्ले का है वो जयपुर चोमू बेल्ट आता है, तो इसलिए बेसिस सेंटर जैसे जयपुर रखा है। अगर जैसे सोयाबीन की बात करें तो वो इंदौर है, और चने का बात करें तो बीकानेर आ जाता है, क्योंकि वहाँ का क्वालिटी और सब कुछ देखते हुए, प्रोडक्शन और सब कुछ देखते हुए बीकानेर शुड बी द बेसिस सेंटर। और बेसिस वैरायटी एंड टेंडरेबल वैरायटी भी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स में जाएंगे तो उसमें बता दिया होता है कि दिस इज द वैरायटी विच इज बीइंग एक्सेप्टेड, और यही आपको डिलीवर करना है व्हेन एवर यू आर डिलीवरिंग एज अ सेलर और डिपॉजिटर। और ट्रेडिंग यूनिट, डिलीवरी यूनिट, वो सब जो भी आपका मेट्रिक टन या क्विंटल्स में, जिसमें बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इट कैन वेरी। और टिक साइज आपका किसी कमोडिटी का ₹1 होता है, किसी का 0.5 होता है। टिक साइजेस मतलब कि आपको मतलब किसी कमोडिटी की टिक साइज ₹1 है फॉर एग्जांपल, तो 5000 की लास्ट ट्रेडेड हुआ है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट बिट 5001 का लगा सकते हो, आप ये नहीं 5000.5 का नहीं लगा सकते। जिसमें 0.5 है उसमें आप लगा सकते हो 5000.5। तो दिस इज व्हाट टिक साइज मींस। एडिशनल डिलीवरी सेंटर ये होते हैं कि आपका मेजर जो ट्रेडिंग हब है उसके अलावा भी कुछ कुछ जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं ऑफ दैट कमोडिटी, तो वहाँ पे एडिशनल डिलीवरी सेंटर रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बार्ले का बात करूँ तो मेजर जयपुर है, उसके अलावा गंगानगर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग हब ऑफ बार्ले, तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर जैसे बार्ले का गंगानगर है। चने के केस में आप देखेंगे तो आपको बीकानेर के अलावा जयपुर भी मिलेगा, अकोला भी मिलेगा, बिकॉज दे आर दी ऑल्सो दी वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग हब्स, बट अगेन द बेसिस सेंटर उस केस में जैसे बीकानेर हो जाता है। और टाइमिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इज जस्ट योर ट्रेडिंग आवर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स अगेन आप जाके किसी भी प्रोडक्ट का आप चेक कर सकते हो, हर प्रोडक्ट का स्पेसिफाइड रहता है डिलीवरी स्पेसिफिकेशन से, ओके स्टैगर्ड फॉर्म में होगा, जो 5 डेज का भी मैंने बताया कंसेप्ट। और मैच्योरिटी डेट आपका वही जो एक्सपायरी डेट रहता है उसी के बेसिस पे आपका रहता है। बाकी रिस्क पैरामीटर्स और ये जो भी रहते हैं, मतलब हर कमोडिटी की, जैसे किसी कमोडिटी के लिए 3% प्लस 1% करके 4% तक ही आप मैक्सिमम प्राइस को एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हो उस दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब उसको कहते हैं कि जैसे 4% पहुंच गया किसी कमोडिटी का, या कुछ कमोडिटीज़ के लिए 4+2 यानी 4% पहुंचा तो 15 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग पॉज होगी, फिर 2% तक और आप लेके जा सकते हो, फिर सर्किट लग जाता है, लाइक उसके आगे फिर आप नहीं उस दिन में ट्रेड कर सकते हो। तो ये टू मिटिगेट दोज रिस्क फैक्टर्स एंड ऑल, ये सब किया गया है। फिर देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्जिन एंड ऑल। इनिशियल मार्जिन है अपने स्पेशल, वो आप मतलब एक बार मार्जिन सेक्शन में आप देखेंगे तो मतलब जैसे इनिशियल मार्जिन ही मेन मैटर मतलब उस समय करता है जब आप इनिशियली आप
बिड लगा रहे हो तो एटलीस्ट इनिशियल मार्जिन उतना तो देना पड़ेगा। किसी कमोडिटी का 8% रहता है, किसी का 9% रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है कि आपको जिस भी दिन आप ट्रेड में आ रहे हो आपको पूरा अमाउंट 100% नहीं पे करना। आप 8-9% मार्जिन मनी डिपॉजिट करके उसके बेसिस पे मार्क टू मार्केट होता है जब तक फाइनल सेटलमेंट तक। तो बस आपको उतना ही इनिशियली पे करना रहता है इसमें। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था अपने प्रीवियस स्लाइड में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें एक आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट दो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग कमोडिटी इन द स्पॉट मार्केट। ऑप्शंस इज सॉर्ट ऑफ लाइक इसमें एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता टू बाय और सेल। मतलब इसमें बेस्ड ऑन द आप जो भी पोजीशन ले रहे हो, मतलब अगर कॉल ऑप्शन है तो टू बाय, और अगर पुट ऑप्शन है तो टू सेल। आपके पास राइट रहेगा बट ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, बट अदर पार्टी के लिए वो कंपलसरी हो जाता है, लाइक वाइस वर्सा इन बोथ द सिचुएशंस। तो और इसमें क्या है कि मतलब अभी तक जो भी हमारे फ्यूचर्स जिन जिन प्रोडक्ट के चल रहे हैं उसी का ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है। मतलब कुछ के नहीं है बट जितने के भी ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं उनके ऑलरेडी से पहले से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। सो अगेन लाइक मेजर रोल ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज आ जाता है आपका फेयर प्राइस डिस्कवरी। मतलब इसमें मेजर यही पॉइंट्स हैं, फेयर प्राइस डिस्कवरी होती है, ट्रांसपेरेंट रियल टाइम आपका प्राइस डिसेमिनेशन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। उसके अलावा आपको लिक्विडिटी मिल जाती है पार्टिसिपेंट्स को। और मतलब बायर और सेलर को एक जगह पे लाने का काम करता है एक्सचेंज। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अवॉइड हो सकता है। और जो आपके it's having like everything is organized here, like robust, we have a robust clearing and settlement systems। तो उससे क्या है कि काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क मिटिगेट हो जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ही लिया है। एंड इट्स फेयर सेफ एंड ऑर्डरली मार्केट है इसमें। तो ये मतलब एक मेजर मेजर थंबनेल्स हैं जो रोल ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज के रहते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड ऑन फ्यूचर मार्केट यही है कि आपको इसमें रिस्क ट्रांसफर का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर आप हेजिंग करते हो तो आप इसमें अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्राइस सिग्नल्स मिल जाते हैं आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हुए। तो फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब उनको क्या प्राइसेस लग रहे हैं किस कमोडिटी में, तो उस हिसाब से दे कैन टेक अ डिसीजन। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। मान लीजिए स्पॉट और फ्यूचर, मतलब स्पॉट से फ्यूचर पे आपको लगाने का खर्चा कि एक्स्ट्रा अगर आपको 10-15 रुपए और मिल जाते हैं तो वाई विल नॉट एनीवन इन कैश दैट। तो ये भी एक आर्बिट्रेज की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हर एक को। और वेयर हाउसिंग सेक्शन, ये एक लास्ट सेक्शन है मेरी स्लाइड का। ये वेयर हाउसिंग इज द का जो सेक्शन रहता है अपने इस एक्सचेंज ट्रेड्स में, तो इसमें फिजिकल डिलीवरी जो मैंडेटरी होती है तो वो हमारे जो भी डब्ल्यू एस पीज रजिस्टर्ड होते हैं वो जस्ट दे एंश्योर दैट स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, मेंटेनिंग देयर वैल्यू इंटैक्ट एंड फैसिलिटेटिंग गुड डिलीवरी। और वेयरहाउस को डब्ल्यू डी आर ए से रजिस्टर होना कंपलसरी है। और डब्ल्यू एस पी का अपनी जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन रहती है एक्सचेंज की उससे इम्पेनल होना जरूरी है। तो एक बेसिक जस्ट एक फ्लो चार्ट है, इसको आई विल एक्सप्लेन इट ब्रीफली एंड फास्ट। लाइक यहाँ कोई भी सेलर है तो वो पहले अपना गुड्स एग्रीगेट करेगा और सॉर्टिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन करने के बाद में ऑनलाइन ही आप वेयर हाउस स्पेस बुक कर दोगे, अपना ट्रांसपोर्ट करके लेके आए, अपना डिपॉजिट किया गुड्स इन एक्सचेंज अप्रूव्ड। उसके बाद वहां से आपका सैम्पलिंग होगा। सैम्पलिंग लेने के बाद में सैम्पलिंग का हर एक कमोडिटी का प्रोडक्ट नोट में द वे इट शुड बी सैम्पल्ड वो आपको मिल जाता है। प्रोडक्ट नोट किसी भी कमोडिटी का देखना चाहते हैं और उसके बाद वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होती है एंड जो असेयर सर्टिफाई करता है ओके जो आपके कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स में जो भी क्वालिटी है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। नहीं कर रही है तो आपका लॉट रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, लॉट रिजेक्ट हो जाता है। और एंड इफ इट्स मैचिंग देन इट्स एक्सेप्टेड एंड उसके बाद आपको यू गेट योर ई रिसिप्ट एंड दैट्स हाउ यू डिपॉजिट योर गुड्स ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज। और
यही है, मतलब क्लियरिंग ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंटिटीज इन्वॉल्व भी मैंने बताई दी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग बैंक्स जो भी हैं, एंड द डिपॉजिटरीज आल्सो आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। और जैसे एक मेन फंक्शन नोवेशन है, तो यही मतलब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहता है अपना, इट इंटरपोजेज इटसेल्फ बिटवीन, मतलब एक बायर एंड सेलर के बीच में जो ये एक्सचेंज का काम रहता है, लाइक इट बिकम्स सेलर टू एवरी बायर एंड अ बायर टू एवरी सेलर, सो एज टू अवॉइड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट्स वगैरह नहीं हो, और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट टू एंश्योर दैट इट हैपेंस। लास्ट मतलब ये मेरे सेशन का मतलब ये लास्ट एक क्वेश्चन है, लाइक इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच आई हैड एक्सप्लेन्ड कपल ऑफ टाइम्स इन माय प्रेजेंटेशन, लाइक व्हाट इज आर्बिट्रेज। लाइक पहला ऑप्शन है एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन इन स्पॉट मार्केट, और एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजेक्शंस इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, या इट्स साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शंस इन टू और मोर मार्केट्स, या एंटरिंग इनटू सेल ट्रांजेक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट। Like it's also very simple, like I had already explained couple of times in my presentation. Anyone please? Yeah, it's a right answer. Like इसमें वही simultaneously entering into sell and purchase transactions in two or more markets. That's what we do, because as I explained with that example of Jaipur and Delhi, like if I find a disparity between any two markets, I try to utilize it by purchasing it one market which is in discount and selling it in the market which is at the premium in this disparity. So that's the right answer. C, simultaneously entering into sell and purchase transactions in two or more markets. So it's just look those basic advices of safe investing, like you need to trade only through SEBI registered member, और जो भी आपके KYC norms होते हैं, you need to be compliant with those KYC norms, and आपका always quote your unique client code, cross check your trade genuineness through trade verification facility, और ब्रोकर को आप इंसिस्ट करिए टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एवरी सेटलमेंट with complete details, and you need to register your mobile number, email ID with stockbrokers, etc. You need to insist on periodical statement of accounts from broker, and you need to pay required margin and mark to market obligation in time. Keep away from like वो डब्बा ट्रेडिंग जो कहते हैं, like, and get details of brokerage fees and other charges levied by the member. And what's like, don't get carried away by एनी एल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट, रूमर्स और हॉट टिप्स। कुछ भी आजकल रूमर्स आ जाते हैं कि ये ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, बट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स एंड ऑल, एंड देन ओनली रिएक्ट ऑन दैट थिंग, एंड डोंट लेट accept any unsigned duplicate contract notes or something like that. Don't neglect to don't share your internet trading accounts password and all, like these are the basic things which you need to take caution of, so that no one else misutilizes your uh, account and also. And apart from that, uh, don't forget to take note of risk involved in trading. Don't delay your payment deliveries of commodities to member, or else again those some extra penalties and all things and all happen. Then don't issue checks in the name of authorized person. No, just these were the basic do's and don'ts. So I bring an end to my presentation here. Like if anyone has any queries, किसी के कोई queries या question इस presentation के उसमें, तो वो पूछ सकते हैं। Anyone having any questions?
Uh, I'm repeating again, like anyone having any questions? Yeah, can you differentiate between futures and contracts a little bit? Yeah, like futures, like just a minute, I'll get to the slide. And like futures, futures जो होता है, like any of the contract which you see on the screen, like futures is just a derivative of the spot markets. But the in the options, like उसमें you put up your margin money, उसके हिसाब से whenever the settlement and all, whenever it happens, you settle based upon your जो भी M2M price and your final settlement price. Those settlement and all happens in future contract, but in options contract it is like, uh, suppose here we differentiate it by call option and put option. There are two types of option. In the call option, it is like if you buy a call option, suppose for example you buy a call option at a strike price. एक strike price होती है, मतलब अगर इस प्राइस पे आया तो आप बाय कर लेंगे, तो जो स्ट्राइक प्राइस होती है, इफ द प्राइस रीचेस एट दैट पॉइंट, तो इट इज योर राइट दैट यू कैन बाय, और जो अपोजिट पार्टी है उसको सेल करना ही पड़ेगा, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, लाइक यू हैव टू take that delivery and all. But in case you have sold a put option, for example, अगर आप put option है, so again it is not an obligation that you need to sell at your strike price. Strike price is जिस price, जो भी जिस price पे आपने you have decided to do that your put option or call option, whichever the way you are. So it is just in future, like you have to settle it at this price. You have done, you have to settle it. If you are a seller, through delivery you have to settle it. And similarly in the case of buyer, you are bound to take the deliveries. But in options contract, it is like if call option and put option happens, so in call option, if you have bought it, you have the right to buy, take if you want to, but you are not obligated to take that delivery. In similarly in the vice versa, if you have sold your put option, you are you have the right to sell, means like the other party cannot refuse, but it's not, you are not obligated. Like if you feel you are getting something better in physical market, you can avail the benefits from in the physical market rather coming up here. Yeah, Hope okay, I I, understood. Thank you. yeah, hope like yeah, but like in this month there would be definitely some presentations on option and goods also. Like those presentations you can attend, like in that, like here I have given a basic introduction, basic I have test those pointers. And also in the presentation involving only on option and goods, you can get a good half an hour presentation with some illustrations and examples and all on option and goods. Okay. Anyone having any other question? Anyone having any other question, please say, like, or else like I would be closing the presentation. Okay, then thank you all for spending your time and coming up here for this presentation and all. We would keep arranging such presentations on different topics. So like based on the whenever you get notified, do come for the other presentations as well. Stay safe. That's all from my side. Thank you all for attending the webinar.